दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डाटा वैलिडेशन, जो कि डाटा ऑप्शन के अंडर डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन के अंदर डाटा वैलिडेशन है। यहाँ पे हमारे पास 6-7 ऑप्शंस हैं, 2 2 4 6 7 ऑप्शंस। वी कैन यूज़ इट इनटू अवर डेली रूटीन। उसको कैसे बेस्ट यूज़ किया जाता है ये आज मैं आपको बताऊँगा। लेटर से वी हैव गिवन दिस data to be entered by our employees, and we want that employee should not enter the wrong values into the header showing asking for that value। तो कैसे है, लेटर से मैंने होल नंबर एंटर करना है। TDS डिडक्टेड में मुझे पैसे नहीं चाहिए। आई वांट ओनली द इंटीजर वैल्यू एंड नॉट द डेसिमल पोर्शन। तो कैसे है, मैं यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज डाटा वैलिडेशन का मतलब है वैलिड डाटा इनटू द सेल, नॉट अलाउइंग द यूज़र टू एंटर द रॉन्ग डाटा। सो मैं डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन के अंदर होल नंबर में मैं जो ऑप्शन चूज़ करूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से ज़्यादा की वैल्यू ही एंटर करें, और इसको जो दूसरे सेल्स भी इसकी सेम रेंज के हैं उसमें अप्लाई करें। ओके, नाउ यू कैन चेक 100 it will allow, 100.50 it will not allow you to enter because the data validation is restricting you to enter. You can enter 0, you can not enter -1 because 0 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू और इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल पोर्शन नहीं होना चाहिए। 1000.45 won't allow, 1000 is allowed, 4500 allowed, -45 not allowed। सो ये तो पहला है डाटा वैलिडेशन का होल नंबर। अनदर वन इज़ डेसिमल पोर्शन। अब डेसिमल पोर्शन में मैं डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके दूसरी ऑप्शन डाटा वैलिडेशन लूँगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट अस से 0। देयर आर लॉट मैनी अदर ऑप्शन यू कैन चूज़ एज पर योर डाटा एंट्री। यहाँ पे क्या है, सैलरी में मैं चाहता हूँ कि पैसे भी आ सकें। डेसिमल पोर्शन इज़ अलाउड, 100.45 अलाउड, 0 अलाउड, -10.45 not allowed, less than 0 is not allowed, but otherwise 10.45 allowed, 10 also allowed। So this is wherever you want the decimal allowed, then you have to use the decimal. If you don't want the integer portion, decimal portion, then you can use the whole number। Then the very good option is list। let us say यहाँ पे मुझे एम्प्लॉइज़ का स्टेटस भरना है। एम्प्लॉई परमानेंट है, एड हॉक है, PF ले रहा है या नहीं ले रहा है, परमानेंट डिसेबल्ड है या फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, या कुछ भी मीन्स जो उसका स्टेटस है एम्प्लॉई का आज की डेट में वर्किंग है या एक्सपेल्ड है या रिटायर हो चुका है। तो हाउ कैन आई डू दैट? we'll have to define the list। I have already defined, I'll unhide the sheet। so ये है स्टेटस, एड हॉक, एक्सपेल्ड, परमानेंट, या यहाँ पे मैं डिसेबल्ड ले सकता हूँ। तो क्या है, इस रेंज को डिफाइन करके इसका नाम डिफाइन करेंगे। ये नाम मैं इसका फार्मूलाज में जाके नेम मैनेजर में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में ले सकता हूँ। जो टॉप रो में लिखा हो वही इस रेंज का नाम हो जाए। तो ये जो रेंज है इसका नाम स्टेटस है। आफ्टर डिफाइनिंग इट आई विल जस्ट हाइड दिस शीट। अब डाटा वैलिडेशन में इस जगह पे मुझे चाहिए कि इन एम्प्लॉयज़ में से मैं चूज़ कर सकूँ कि मेरे पास कौन से हैं। जस्ट गो टू द डाटा वैलिडेशन एंड अगेन फ्रॉम दैट यू हैव टू चूज़ द लिस्ट। अब लिस्ट में मेरा सोर्स क्या है, जो मैंने नाम डिफ़ाइन किया है। यू कैन जस्ट प्रेस द की F3, जो मैंने नाम डिफ़ाइन किया है वो सामने आ जाएगा। तो वी आर जस्ट टू चूज़ दिस इनटू दिस रेंज। लेट अस से स्टेटस अब इसका परमानेंट है। ये जो एम्प्लॉई है ये सस्पेंडेड है। ये एम्प्लॉई इज़ विदाउट ESI और PF। ये जो एम्प्लॉई है विदाउट पे है। ये जो है डिसेबल्ड है। ये एम्प्लॉई मेरा परमानेंट है। अब मैं इसमें आई कैन नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ दिस रेंज, जो इस रेंज में नहीं डिफाइंड है। लेट अस से फायर्ड आई कांट यूज़ बिकॉज दिस इज़ नॉट द any option defined into the list।
So I have to define or update the list of the status which into the sheet which I have hidden at present. You need to update that range if you want that this permanent should be entered into. Okay, then the next one is date of joining DOJ. When this employee has joined, I want to restrict this limit to date between, we can just say after 1/4/18 who have joined and till today. Here we can use the formula today, means up to today any employee whosoever has joined should be, the date should be into between this range. Now let us say first I'll enter the wrong date, 31st March. Since I have defined we can enter only after first for April 18, it won't allow you to enter. So you need to enter only the date in between the range defined. Let us say I am entering the post dated, today is 8th April 20. Let me enter 9th April 20. It won't allow because you cannot exceed today's date. Nobody can join in future right now. So okay, these are the date parameters you can use. And the next one is text length. So let us say we all know PAN is of 10 characters. I can restrict this. Just go to data validation and restrict it to the its text length should be equal to 10, because neither less nor not more than 10 should be allowed. Let us say A B C D E 1 2 3 4 E. These are the 10 characters. Let me enter one more. It won't allow. If I delete the last one, it will allow me to enter. It is up to 10 characters. Let me enter less than now 10 1 2 3 4. It won't allow me to enter. You will have to enter only 10 characters. So this is the benefit of using the text length. Now comes the custom. Custom means I want to define the formula of my own choice. Let us say I want to place two conditions. Data validation, all of the features allow only one condition, but even if I want to use the double conditions, for instance I want to enter a name wherein the text should not exceed 20 characters, and even the duplicate also you cannot enter, because once you are preparing the salary sheet you cannot enter the duplicate one. How can we use both these conditions? Just go to data validation and choose the custom. Here, since we have to use the two conditions, we'll use the formula AND. First formula is we'll check up the length of, if the length of this cell should be less than equal to 20, comma, the second condition is count if. We have to count the number of occurrences into these cells which should not be duplicate. I'll count this is the range wherein I am to count, and I am to compare this cell should always be less than 2, should not exceed, should always be less than 2 means it should be 1 only. So this is the condition. Okay, let me enter now. This is the name. Since this is less than 20 characters, it will allow you to enter. Let us say I'll copy the, okay, I have not applied this. Now you can apply the format of this cell to this range, or you can just select the range and go to apply this change to all the cells of the same settings. Now let me enter the same. Okay, let me check up the formula if there is anything. Okay, I haven't fixed this one. So this was the condition. Okay, now it will not allow me to enter the duplicate name. Okay, even if, let me say, if now I have exceeded the 20 characters limit, so it won't allow me to enter this one. It will force me to
reduce the characters less than 20. Okay, and now all these cells, what is the shortcut for using this data validation? Let me show you this. That is the Alt DL. This will open this window. You can choose the option whichever you want to place into the range desired. Thank you so much.